Welcome back to our next video, that is different concepts of national income. So national income, everyone knows now what is the meaning of the term national income, but in that also now different concepts are there which we are going to see. So the first one is gross domestic product. Gross domestic product, the short form is GDP, that we are going to see now further. What do you mean by first of all gross domestic product? Gross word आया ना तो उसमें हमेशा depreciation will be included. Keep this thing in your mind. And domestic that means within our बाउंड्रीज, मतलब जो सिर्फ इंडिया के अंदर प्रोडक्शन है दैट इज़ नोन एज द डोमेस्टिक वर्ड. एंड प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज. इन द सेम वे ग्रॉस अगेन डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड. नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब क्या हो जाएगा, जो कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर भी होता होगा, मतलब इंडिया के बाहर जो भी प्रोडक्शन होगा दैट इज़ नोन एज द नेशनल. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट का मीनिंग है द डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड. Now these points we are going to see further in detail, but in short I am explaining you here. Net का meaning है where depreciation is not included. Domestic that means within the territory boundaries, and product का meaning है goods and services again. Again net means what it is where depreciation is not included. National that means which is outside of the boundaries of our country, and product means again goods and services. So now let us go towards the first point, that is gross domestic product. So what do you mean by the term gross domestic product? Gross that means the where whatever goods and services are produced within the territory boundaries. Within the territory boundaries means what it is which is produced in our country itself. मतलब सिर्फ जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज नोन एज विद इन द टेरिटरी बाउंड्रीज, एंड इन दैट द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड. डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एंड द प्राइजेज आर डिसाइडेड. द मार्केट प्राइजेज जो भी होंगे प्रोडक्ट्स के, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द सेम प्रोडक्ट्स. And the formula is GDP is equals to C plus I plus G. C means that is consumption expenditure, and the consumption expenditure is done by the consumers itself. That means we all are the consumers. जो भी हम प्रोडक्ट, जो भी हम मार्केट में जाके कमोडिटीज़ परचेस करेंगे और जो भी हमारा उधर एक्सपेंडिचर होगा दैट इज़ इंक्लूडेड इन द GDP. I stands for the investments, not the income. Always keep one thing in your mind. Economics language में the letter I, it stands for the investments, and it does not stand for the I does not stand for the term income. Investment is done again by the private individuals, or even we can say by the government. Now here we are going to take by the private individuals. जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, these people they do the investments. Next is G. So G stands for the गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑल्सो डज द एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस कमोडिटीज़. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, देन अगेन एजुकेशन फैसिलिटीज़. सो दैट इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो नाउ ग्रॉस अगेन इट स्टैंड्स फॉर द वेयर द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड. नेशनल दैट मीन्स विच इज़ आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब जो इंडिया में प्रोडक्शन होगा उसका भी कैलकुलेशन. बट अगर कोई इंडियन कंपनीज है कि जो फॉरेन में काम करती होगी, एंड उनका जो भी इनकम आएगा, इंडियन कंपनीज अगर फॉरेन में काम करती होगी और उनका भी जो इनकम आएगा दैट इज़ इंक्लूडेड इन द GNP ऑफ आवर कंट्री. ओके. एंड प्रोडक्ट मीन्स अगेन गुड्स एंड सर्विसेज. So the goods and services which are produced within the territory boundaries or abroad is known as the gross national product, and the depreciation is also again included here because gross word is given. Now the formula is C plus I plus G plus X minus M plus R minus B. So let us see what does it mean. C stands for the term that is again consumption expenditure which is done by all of us. We all people do the consumption expenditure. I stands for the investments, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स आर देयर, एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, जो भी वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनके कंपनीज में, दैट इज़ नोन एज द इन्वेस्टमेंट. देन अगेन G स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तब गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगा दैट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. I just told you in the previous point also, it may be health facilities, it may be construction of roads or dams. Then X minus M. X stands for the exports, जो भी एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे बाय आवर कंट्री टू द फॉरेन कंट्रीज. एंड M स्टैंड्स फॉर द इम्पोर्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री इंडिया में लाए जाएंगे दैट इज़ नोन एज द इम्पोर्ट्स. तो उसका डिफरेंस जो भी आएगा इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम.
R minus P. So R stands for the receipts. Receipts मतलब क्या हो जाएंगे, जो इनकम रहेगी of our country, and then the P stands for the payments, मतलब whichever payments are done by our country to the other countries while purchasing or by imports, at that time the payments will be done. So जो भी आंसर आएगा, जस्ट कंसिडर रिसिप्ट अगर 1 लाख रुपीज़ है, पेमेंट्स 80,000 है, सो डिफरेंस इज 20,000. So that 20,000 will be included in the national income. The next one is net domestic product. So net, that means depreciation is not included. Domestic, that is within the territory boundaries, मतलब जो सिर्फ इंडिया के अंदर है, that is domestic. And product stands for the goods and services again. Net domestic product means the goods and services which are produced within the territory boundaries only of our country, and it does not include the depreciation. So here the formula is given, that is GDP minus depreciation. Next is net national product. Net national product, that means the goods and services which are produced within the territory boundaries, even out of the boundaries, or we can say which is produced even in the abroad, that is known as the net national product. And the net national product does not include the depreciation. The depreciation is not included in the term net national product. So again one difference you just see here, that is here NDP is written, and NDP अगर लिखा रहा, here D letter is given. So इधर भी D आया, मतलब you can remember like this in your mind. Here D is given, so इधर D है, and in this next one here N is written in the middle, so here also again N is written. So in this way you can keep the formula in your mind. Thank you.